समझ नहीं आ रहा अपने सैलरी इंक्रीमेंट का क्या करूं। बेटा इतना क्या सोच रहा है, अपने म्यूचुअल फंड्स के एसआईपी का टॉप अप करा ले। दिस इज द राइट टाइम। क्या समझ में नहीं आया। बेटा इतना क्या सोच रहा है, अपने म्यूचुअल फंड्स का एसआईपी टॉप अप करा ले। दिस इज द राइट टाइम। आप समझा। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. There's something happening in Bihar that is extremely intriguing and dramatic. First, of course, has been the historically high voter turnout. Phase 2 has even outpaced Phase 1 in the turnout figures. A high turnout classically can mean one of two things: an overwhelmingly pro-incumbency vote or a vote for change. In Bihar, both sides of the political divide have argued that the high turnout goes in their favor. The Prime Minister said it was indicative of a pro-incumbency, and leaders like Prashant Kishor said it was indicative of a vote for change. As both phases record a high voter turnout, what are the exit polls saying? That's what we will be bringing you in the course of this special broadcast, with the health warning that exit polls are not always right and in the past have sometimes got it very wrong. Well, there's no great mystery here. I'm Barkha Dutt. You're with the Mojo Story. An overwhelming number of exit polls this evening are predicting a decisive victory for the NDA. 6 exit polls so far have forecast a comfortable victory for the NDA alliance. That's the BJP and the JDU, and of course smaller parties like the LJP as well. Now, the one big difference between the last assembly election and this election is the fact that Chirag Paswan of the LJP had contested separately from the NDA the last time, many believe to weaken Nitish Kumar. In fact, when this campaign started, different political experts spoke of a fatigue factor with Nitish Kumar. Even when I traveled to Bihar, many NDA voters said they wanted a change. But the Mahila scheme of 10,000 rupees may well have rebooted Nitish Kumar's fortunes. And talking about the Mahila scheme, it may well be the female voter of Bihar that is both the X and the Y factor of this election, at least if the exit polls are correct. Prashant Kishor, who was meant to be a game-changing factor in these elections and had famously said to me and others that the performance of the Jan Suraj party would be ya arsh pe ya farsh pe. Well, the exit polls aren't predicting great seat numbers for him. Some say he may not even score one seat. We are, of course, waiting for the breakdown of vote share forecasts, which we do not have yet. But there is a forecast of possible seats from 6 different polls, all predicting a comfortable victory for the NDA. We'll wait for the data to get more granular, but as we bring up different polls and also bring you the poll of polls, let me introduce our panel this evening. Ashwani Shahiji of the BJP is with us. Namaskar, Ashwani ji. Sugata Srinivasraju, senior journalist, is with us, a columnist, author as well. Always good to have you. Dilip Cherian, brand guru, image guru, political analyst, is with us. Always a pleasure, Dilip. And also joining us is Deepak Kumar of the Jan Suraj party. That's Prashant Kishor's party. Namaskar, Deepak ji, and good to see you. So without further ado, let's start bringing up the poll numbers. As I mentioned, the suspense is very little in this forecast this evening. We have numbers from 6 different exit polls, and we'll keep adding to this as we look at the numbers. And 6 different exit polls are predicting a comfortable victory for the NDA. You see some of them on your screen now. The People's Pulse, for example, predicts 133 to 159 seats for the NDA, with 75 to 101 for the Mahagathbandhan.
if we could just go back, I was still reading that the JSP, that's the Jan Suraj party, between 0 to 5, so not a complete nothing for the Jan Suraj party, and 2 to 8 for others. Let's move on to the next slide now, if we can. We have the Matriz poll that's predicting even greater numbers for the NDA, 147 to 167 for the NDA, 70 to 90 for the Mahagathbandhan, 0 to 2 for the Jan Suraj party, and 2 to 8 for the others. I think we can look at one more poll perhaps, or two more polls. But as I said, not too much suspense this evening. This is Dainik Bhaskar's exit poll, also predicting a comfortable victory for the NDA, 145 to 160 seats there for the NDA, 73 to 91 for the Mahagathbandhan, not predicting any seats for the Jan Suraj, and 5 to 10 seats for others. So those are three major exit polls that we've shown you. Then we have JVC, 135 to 150 for the NDA, 88 to 103 for the Mahagathbandhan, 0 or 1 seats for the Jan Suraj party, and 3 to 6 seats for the others. And I think we finally have maybe one more, P mark, 142 to 162 for the NDA, 80 to 98 seats for the Mahagathbandhan, 1 to 4, this one predicting a little bit of a better performance for the Jan Suraj party, and 0 to 3 for the others. And do we have one more? I think maybe we do have one more of the individual agencies as we look at these numbers, an overwhelming number of the polls predicting a comfortable victory for the NDA. All right, those are the numbers we have so far. We'll give you the poll of polls average of these numbers in a while. Ashwani ji, आप ही से शुरू करना चाहिए. एनडीए के लिए जीत की घोषणा एग्जिट पोल्स करने हैं. याद दिलाना पड़ेगा सबको कि ये रिजल्ट्स नहीं है. The actual results are on the 14th, but I'm sure you're very happy to see these numbers. We don't yet have the division कि इसमें जेडीयू और बीजेपी का क्या इंडिविजुअल परफॉर्मेंस और एलजेपी का क्या परफॉर्मेंस रहा है. आप क्या कहेंगे? व्हाट इज योर फर्स्ट रिएक्शन? बहुत लोगों ने कहा था कि नीतीश कुमार के साथ थकावट का एक फैक्टर था. द एनडीए डिड नॉट इवन डिक्लेयर हिम टू बी द सीएम कैंडिडेट. इन आंकड़ों को देख के क्या कहेंगे आप? बरखा जी, देखिए, जो आज एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है, पोल दिखा रही हैं, सभी लोगों ने लगभग एनडीए को एक शानदार विजय के तरफ जाते हुए दिखाया है. लेकिन वाकई आपने कहा कि भाई ये एग्जैक्ट नहीं है, एग्जिट पोल हैं, लेकिन जहां तक हम लोगों का अनुमान नहीं, आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि बिहार की जनता ने नीतीश जी, मोदी जी के नाम पर वोट दिया है. ये जोड़ी फिर से हिट होने जा रही है बिहार में, और हम लोगों को पहले से ये भरोसा था कि ये काम होने जा रहा है. नीतीश जी के कामों के ऊपर, मोदी जी के विकास के मार्गदर्शन के रूप में आज ये जो है एग्जिट पोल के रूप में हम लोग देख रहे हैं. बहुत सी चीजें चलाई गई, जिसमें एक बात आपने कहा अभी कि नीतीश जी को हम लोगों ने मुख्यमंत्री का कैंडिडेट नहीं घोषित किया. हमने मना कब किया था? ये तो एक नैरेटिव बनाया जा रहा था जो कि बन नहीं पाया. ये विरोधी दलों के द्वारा, हम तो हमेशा कहते रहे थे कि हम लोग नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, हम लोग नीतीश जी के नेतृत्व में, दिल्ली में मोदी जी का नेतृत्व है, बिहार में नीतीश जी का नेतृत्व है, लेकिन इसको दूसरी तरीके से नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई. आज बिहार की जनता ने इस चुनाव को एक उत्सव के रूप में लिया, और वो उत्सव जिस तरीके से छठ मनाया जाता है उस तरीके से ये उत्सव मनाया गया, और बिहार में लोगों ने रुककर वोट दिया. ये सैलाब आज बता रहा था, जो दोनों चुनाव का 2 दिन था, दोनों दिनों में सैलाब बता रहा था कि जनता कहां जा रही है. महिलाओं का जो रेला लगा था, और सबसे बड़ी बात कि जिस तरीके से राहुल गांधी जी जेएनजी को भड़काने में लगे थे, उसी जेएनजी को उनके परिवार वालों ने 90 के दशक की याद दिलाई कि किस तरीके से हमको जो है डर के मारे पलायन करना पड़ता था. मुख्यमंत्री के घर में चंपा विश्वास को याद दिलाया. मुख्यमंत्री के घर में मांडवाली की जाती थी, किडनैपिंग की, और शाम को 5 बजे बिहार के बाजार बंद हो जाया करते थे. सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं था. आज मैं अभी एक टेलीविजन चैनल पर सुन रहा था, एक रिपोर्टर, बड़े अच्छे प्रख्यात हैं, नाम लेना उचित नहीं है, उन्होंने कहा जबकि
स्पष्ट रूप से उनकी जो है जो वो विश्लेषण करते हैं वो मोदी विरोध और एनडीए विरोध का होता है, लेकिन उनके मुंह से मैंने सुना, मुझे घोर आश्चर्य हुआ कि मैं तो 100 दिन 20-20 दिन करके 100 दिन में बिहार में रहा पिछले 7-8 महीनों के अंदर, लेकिन जिस होटल में रुका बिहार के, बिजली नहीं गई कहीं भी। तो जब ये विरोधी संवाददाता और लोग संपादक लोग बोलना शुरू कर दिए तो बिहार की जनता ने अच्छा, नीतीश जी के ऊपर अटूट विश्वास किया और मेरा एक अटूट सवाल, विश्वास का ये जी जी एक छोटा सा सवाल एंड देन आई विल ओपन इट अप फॉर एवरीबॉडी एल्स। आपने कहा कि मोदी जी और नीतीश कुमार जी की जोड़ी हिट रही है दोबारा। आपको मैं याद दिलाती हूं कि गृह मंत्री अमित शाह जी से जब आज तक पे पूछा गया कि चुनाव के बाद अगर एनडीए जीतती है तो मुख्यमंत्री कौन बनेंगे, हु विल बी चीफ मिनिस्टर, तो उन्होंने कहा इसका अपना प्रोसेस होता है, राइट? तो मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि ये जोड़ी अगर इतनी हिट है एंड सर्टेनली द एग्जिट पोल्स आर प्रेडिक्टिंग अ हैंडसम रिटर्न फॉर द एनडीए, ये नीतीश जी क्या मुख्यमंत्री रहेंगे अगर एनडीए की जीत होती है? आपको क्या लगता है? देखिए, जो माननीय गृह मंत्री जी के उस उत्तर का जो एक गलत तरीके से वो दिखाया गया, उन्होंने कहा प्रोसेस होता है। बताइए ना, प्रोसेस कहाँ नहीं होता है? विधायक दल चुनाव जीत कर जाते हैं, विधायक दल का नेता चुना जाता है, हर दल अपना नेता चुनते हैं, फिर उसके बाद जो हमारा एनडीए है जो आज 25 वर्षों से कायम है, इस पर भी बात ध्यान देने वाली है बरखा जी। यूपीए का विसर्जन कर दिया इन लोगों ने, एनडीए अलायंस समाप्त हो गया, लेकिन यूपीए जो श्रद्धेय अटल जी के समय से चला आ रहा है। और आज ये जोड़ी जो आपके स्क्रीन पर है, इसमें कहीं दो राय नहीं है कि हम उनके नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़े और हम उनको मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट नहीं करेंगे, कोई मतलब ही नहीं है। कहीं भारतीय जनता पार्टी ने कभी मना ही नहीं किया। इसमें तो लोग एक देखिए, आप लोगों का भाई अच्छी बात है, काम आप करते हैं कि कौन से सवाल का किस लाइन का अर्थ कैसे निकालना है, वो आपने निकाला, लेकिन कहीं किसी ने मना नहीं किया कि नीतीश जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। नीतीश जी बिहार में हमारे नेता हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव हो रहा है, तो मुख्यमंत्री कौन दूसरा थोड़ी बनेगा जी। आप दीपक जी को कॉन्वर्सेशन में लाते हैं। दीपक जी इज अ लीडर विद जन स्वराज पार्टी, इट इज अ न्यू एंट्रेंट इनटू द इलेक्शंस। दीपक जी, ये जो आंकड़े आ रहे हैं एग्जिट पोल से, आपकी पार्टी के लिए दिस इज नॉट गुड न्यूज। जब मैं प्रशांत किशोर से बिहार में मिली तो उन्होंने मुझसे कहा, और ये लाइन एक स्लोगन बन गई है उनके लिए, या अर्श पे या फर्श पे रहेगी हमारी परफॉर्मेंस। अगर एग्जिट पोल्स के आंकड़ों को देखा जाए तो फर्श पे ही रह गई जन स्वराज। आई एग्री कि वोट शेयर का फोरकास्ट का वेट करना चाहिए, दैट विल टेल अस अ लॉट और अ लॉट मोर। पर क्या आप निराश है इन नंबर्स को देख के दीपक जी? बिहार की जनता ने भरपूर वोटिंग की है इन दोनों फेज में। आप इसको देख रहे होंगे कि फर्स्ट फेज और सेकंड फेज में 65% और लगभग 70% की वोटिंग हुई है। जहां तक एग्जिट पोल का सवाल है, सारे सर्वे आ रहे हैं, मैं इनकी मेहनत को झुठलाना या गलत ठहराना नहीं चाहता, लेकिन जब एग्जैक्ट पोल के फिगर आएंगे तो बिल्कुल अलग आएंगे। हमारे नेताजी ने कहा है कि 14 तारीख को बिहार नया इतिहास रचने जा रहा है, तो उन्होंने कहा है तो 14 तारीख को बिहार नया इतिहास रचेगा, पहली बात। दूसरी बात, हमारे नेताजी पिछले 3 साल से जनता के बीच घर घर जाकर जनता की और बिहार की जो मूलभूत समस्याएं हैं उनके बारे में क्रमवार और बिंदुवार समझाया है। आपको भी पता है कि बिहार की जनता और बिहार की धरती राजनीतिक रूप से हमेशा उर्वरा रही है। बिहार में जिन्होंने भी पदयात्राएं की हैं, जनता के बीच गए हैं, उनसे संवाद किया है, जनता ने उन्हें हमेशा आशीर्वाद देने का काम किया है, उनकी झोली में कुछ न कुछ अच्छा ही डाला है, क्योंकि बिहार की जनता दानशील और कर्मवीर है। तो आप इन आंकड़ों को नहीं मानते, इनको सच नहीं मानते हैं आप? ये जो हमारी स्क्रीन अभी तो खैर वोटर टर्नआउट दिखा रहे हैं जी, वोटर टर्नआउट हमारा है लगभग दोनों फेज के चुनावों को लिया जाए 243 सीट में लगभग अप्रॉक्स 5 करोड़ के आसपास मतदाताओं ने वोट किया है। और 5 करोड़ मतदाताओं में कितना का सैंपल ये इसमें है मैं नहीं कह सकता। दूसरी बात, बिहार में आजादी के बाद सबसे ज्यादा वोटर टर्नआउट है। इसका कारण सिर्फ और सिर्फ हमारे नेताजी प्रशांत किशोर जी को जानना चाहिए, और जाता भी है, क्योंकि उन्होंने बिहार की मूलभूत समस्याओं और मुद्दों को बिहार की जनता के बीच में जाके राजनीतिक रूप से जागरूकता जी, मुझे आपसे बिहार के लोगों को जागरूक किया।
अच्छा, मुझे आपसे एक छोटा सा सवाल अगर आप संक्षेप में बताएं, देन आई विल गो टू दिलीप एंड सुगता। अभी हमारे पास वोट शेयर फोरकास्ट नहीं है, वी डू नॉट हैव द वोट शेयर फोरकास्ट, वी ओनली हैव द सीट रेंज, है ना। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कुछ लोगों ने कहा कि अगर प्रशांत किशोर उतना वोट परसेंटेज ले लें जितना चिराग पासवान ने लास्ट इलेक्शन में लिया था, जस्ट क्लोज टू 6%, then Prashant Kishor has arrived as a serious politician. आपके लिए क्या आंकड़ा होगा वोट शेयर में, वोट शेयर की बात कर रही हूं, जिससे आपको लगे कि जनसुराज हैज ओपनड इट्स अकाउंट वेल? देखिए, बिहार में जनसुराज का बहुत बड़ा वोट बैंक है, जो कि ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं। जो भी आज के डेट में सर्वे कर रहे हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं। पहला वोट शेयर मेरा प्रवासी मजदूरों का है, जो एक बहुत बड़ा चंक है, जो हमें वोट कर रहे हैं लेकिन वो साइलेंट हैं, किसी को बता रहे हैं। दूसरे वोटर हमारे जो प्रवासी मजदूर के जो परिवार हैं, उन्होंने हमें जम के वोट किया है। तीसरा वोटर हमारा ये जो युवा वर्ग है, जो 18 से 35 साल है, जिनको अपना सुनहरा और अच्छा भविष्य देखना है। और पिछले 35 साल से बिहार की जनता ने महागठबंधन और राजग दोनों को देखा है, और इन लोगों ने बिहार को देश में विकास के पिछले पायदान पर खड़ा कर दिया है। चले, अब आई डोंट, बोथ politicians from both sides of the divide have spoken. Let's now get Dilip and Sugata. Dilip, let me bring you in. If these polls are correct, and first we must acknowledge this, Bihar's turnout has been the highest since independence. It is actually extraordinary. We talk so much about the struggles in Bihar, the lack of development in Bihar, but people have voted with great enthusiasm. And it could be different constituencies of different parties. It could be that Congress supporters have responded to vote chori. Prashant Kishor's supporters have responded to change. Nitish Kumar's, female voter has turned out to vote. It could be each party could have drawn out or got out the vote. So one is the turnout that we are actually seeing here. But if these exit polls are correct, and if we can go back to the exit polls, all of which today, or at least 6 of them rather, are predicting a decisive victory for the NDA, what does it do to the power dynamics within the NDA between Nitish and Modi? What does it do to the power, what does it do to national politics and so on? Dilip. The easiest way to look at this is to look at the big numbers. And the big numbers, Barkha, don't lie. This is clearly a vote in one direction. Because if you have such a large turnout, I think what is getting ruled out is the possibility that people will spread their votes all around. I think that the chances are that the indication from a large voter turnout, I would say, is that people have made up their mind. The second thing, I think, is that as we get more granular with numbers, I would not be surprised to see that women have come out in larger numbers than in previous years. That would also be something to look for. The third thing is whether within the NDA allies, the interesting thing would be to see how the vote share gets, and how the seat share, not vote share in that case, how the seat share gets allocated between the two partners. As far as the other parties are concerned, if the young have bitten the bait of Tejashwi Yadav's wild promise of a job for every family member, for one family member from each family in government or from government, then that could be the factor. But I think that in general, as we have all said so far, the level of political clarity in the average Bihari citizen suggests that neither a 10,000 rupee bribe nor a wildcat promise of a job for every one member of each family is going to cut as much ice. They will actually assess the prospects of leadership. And my sense is that a large turnout is more likely to be a message for change. And that is not what we are seeing on the screens at the moment. So I think your health warnings are valid, and we need to keep those in mind. So are you skeptical about these numbers, Dilip? Yes, I am skeptical about the numbers, because I think that they've tilted quite seriously.
and perhaps because of the nature of the beast, as it were. Okay, so Dilip Cherian says that large numbers usually indicate change or they indicate a wave pro-incumbency. And if it is a wave pro-incumbency, what would be the reason for that? And we'll put that to Ashwani Shahi in just a moment. Sugata, what do you think looking at these numbers? You know, Bihar elections in India and forecasting elections is hazardous business, and I really think the voter is so smart that nobody can actually know the mind of the voter. But this seems if these exit polls are correct, it's a unidirectional election. It's not like last time then where the RJD was the single largest party. We're not even looking at that kind of scenario if these numbers are accurate. You are actually looking at a wave election of some kind, or a unidirectional election. Dilip Cherian says he's not convinced because when you juxtapose these numbers with the turnout, it doesn't add up for him. Does it add up for you? Barkha, thank you very much. See, I do agree with you that it's a unidirectional election because I have been watching several pollings that were being done, surveys that were being done for the last 3 months, several agencies that were doing the polling. For the longest time, see, until about September, the vote share percentages for both the Mahagathbandhan and the India Alliance was almost on par. But the moment the women vote transfer scheme was announced, you started seeing the tilt. Yeah. So that at that point, that started widening. But after the ticket distribution, it was very, very clear that I think they had messed up the ticket distribution. The India Alliance had messed up the ticket distribution. And also, if you just theoretically, academically, Barkha, if you look at, there is the NDA, and look at who is opposing the NDA. There are two other alliances. It's not just the India Alliance. But if you look at the composition of that greater democratic alliance that OIC and BSP and all these people are there, they're all cutting into the India Alliance. Can I interrupt you just for a second? Because since you brought up women, there's at least one exit poll that has actually given us a gender breakup of their forecast. And this is the People's Pulse exit poll that says that among their surveyed voters, 66.8% of the are women voters, when you look at the NDA breakup. And if you look at the contrast with the Mahagathbandhan, only 24.8% are women. So I just wanted to point that out. But please complete your point. This is exactly what I was pointing out. Looking at the surveys which were being done week on week, and you started seeing those numbers shift. From 41%, on par. They were both 41.5% at some point, and then that started tilting, and that's when you started feeling that this whole scheme thing has worked. See, just announcing the scheme would not have helped. In fact, they ensured that it also reached the women. The women experienced that new scheme right before the election notification came. So I think that made a huge difference. That's one. But knowing Bihar, it's not just about a development scheme. It's also about the kind of caste composition, which, it's very, very unique to Bihar, where you have the EBCs and OBCs. And what is it that makes Nitish indispensable? See, Nitish's health-related narrative, that he has lost his mind, his dementia has set in, all kinds of things were being said. But more and more of that came out in the public realm. I think the EBCs, this is my hunch, I'm not trying to say that's how it has happened, but I feel the EBCs who feel extremely insecure about the Yadav OBCs, coming back to power, I think they thought that they should stick together as long as Nitish is there, come what may. And that I think has played a factor, that has played a role. In EBCs, I think about 35-36% of the Bihari population. And then there are the Mahadalits who also don't want a Yadav-led OBC combination to come back to power. So if these numbers are correct, Sugata, it would be an extraordinary moment for Nitish Kumar. Consolidation, exactly. Yeah. And Barkha, one point, in the previous election, if you remember, the 2020 election, Nitish's party had dropped that. It was the single biggest loser was Nitish's party. That's right. The single biggest
gainer was the BJP. So I want to yeah, yeah. So I in fact want to, although Ashwani ji will say ki Jodi bani rahe and Jodi is a super hit, the fact is many people believe in 2020 the reason that Chirag Paswan stayed outside of the fold of the NDA was a weakening of Nitish Kumar. I want to actually welcome our other guests to the program. I see Professor Ashwani Shekhar with us as well. But I first want to come to, and also Shyam Kumar ji of the RJD. Namaskar Shyam Kumar ji, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का कि आप हमारे साथ बने रहे. Dilip, quick comment on this sort of revival, as it were, of Nitish, who had been written off in this election. A lot of even BJP voters or NDA voters were saying NDA will win, but Mukhyamantri koi aur banega. I know you are skeptical of these exit poll numbers. You're not convinced, but assuming for a moment, for argument's sake, that this is how the result goes as well. I mean, it will be a very fascinating revival, or Nitish Kumar would have proved that he is amongst the most underestimated politicians of India. No doubt that's true, Barkha. Beyond my skepticism, the fact is that because the BJP has no real face that it is fighting with, Nitish Babu has a huge advantage. That's one. If you look at the woman vote, it shows that yet again. What is probably driving the women to go towards the NDA is the fact that they are comfortable going with someone trusted and reliable, and that the fear of a jungle Raj, which has been thrown up by the BJP time and time again in this election, is probably the reason why lesser numbers of women have chosen to opt for the Gadbandhan. So we need to look at it from that point of view. And in that context, if you frame it like that, Nitish is a winner all along, because Nitish would get what is called the vote for conservative continuity. And this is something that has been his advantage. The fact that he's hardly been seen probably doesn't bother them. Okay, I want to welcome our three new guests to this exit poll programming. We have Dr. Kartikeya Batra with us, back after a long time. Namaskar and good to see you. As I said, we have Dr. Shyam Kumar of the RJD with us. Namaskar, sir. And Professor Ashwani Kumar is with us as well. So really namaskar to all three of you. And let me get quick reactions before Kartikeya takes us deep into the numbers. Professor Ashwani, your take, and also Shyam ji, आपसे पूछना चाहूंगी कि आप निराश हैं? मैं श्याम जी से शुरू करती हूँ. कितने निराश, how disappointed are you? अगर इन आंकड़ों को देखा जाए, 6 exit polls predicting a comfortable victory for the NDA. देखिए बरखा जी, निराश बिल्कुल नहीं है. ये आपका एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है. रिजल्ट आना बाकी है. सो इस तरह के जो स्पेकुलेशन है, इस तरह के जो अंदेशा कई बार असफल साबित हुई हैं. आप जानती हैं 2015 के चुनाव के वक्त भी, अगर आपको याद हो, तो इस तरह के कई पोल, सर्वे, स्टडीज आई थी और बाद में असफल साबित हुई है. तो वक्त का इंतजार कीजिएगा. और जो बम्पर वोटिंग हुई है उसके सियासी क्या मायने हैं, आप तो बड़ी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है. जो पावर कॉरिडोर में जो पार्टीज होती है उसका पॉलिटिकल फेयरवेल का वक्त होता है. बस 1-2 दिन की बात है, फिर डिबेट इस पर बड़े मतलब की जाएगी, बड़े मुद्दे पर की जाएगी, जो बिहार के हमारे जो मैटर को हमने टेक ऑन किया है. लिहाजा इस समय तो मैं ये कहूंगा कि ठीक है, डिबेट एंड डिस्कशन करने के लिए मुद्दे ठीक है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम फ्रॉम आवर साइड, बट वी आर वेरी कॉन्फिडेंट. मैं आपको बताना चाहता हूँ. So you believe that the historically high voter turnout, Shyamji, points to change. Points to change. Definitely. This is a wave, this is tsunami, and this is a real change, I tell you. And just wait for a couple of days. क्या होगा वो तो खैर अभी तो मत पेटियों में वो सारे जनादेश बंद है, लेकिन जो हम लोग जमीन पर हैं, हम लोग एक बात यहाँ जरूर आपको बताना चाहते हैं कि 2015 के अगर डेटा को देखें, 2020 के डेटा को देखें, तो आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी थी. तो ये जो जोड़ तोड़ की सरकार की जो पॉलिटिक्स विल नॉट वर्क ऑलवेज. और इस समय आपने देखा होगा, एक बात देखा होगा कि बीजेपी ने जो टेक ऑन किया है, जो सियासी कद बढ़ाया है बिहार में 101 वर्सेज 101, आपको जिस मतलब किस लेंस से देखेंगे, जो इनविजिबल थ्रेड है वो तो मतलब सियासी लोग इसको नापते हैं और बताते हैं
कि जिस तरह से जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज का जो पॉलिटिकल हाइट कम करने का जो कोशिश और कवायद बीजेपी करती रहती है, महाराष्ट्र इसका एग्जाम्पल है। बिहार में ही जो लोजपा है वो पार्टी टूटी, व्यक्तिगत चीजों पर मैं कभी नहीं जाता हूं, इसलिए मैं व्यक्तिगत चीजों पर कभी नहीं जाऊंगा, लेकिन पार्टी टूटी। तो इसलिए मेरा मानना है कि जो आज जो भी सर्वेज है आई है, स्टडीज है, वो दे आर फ्री टू कंडक्ट सो मेनी सर्वेज. What to say? Okay. RJD is firm and clear to have going to form next government under young leader Tejashwi Yadav. Tejashwi Yadav. Okay. So the opposition clearly is not believing the exit polls, and like Dilip, Cherian believes that the historically high turnout has to tell a story of change. Professor Ashwani, how do you respond to that argument that this kind of turnout, the highest since independence, usually points to change? That's what Dilip Cherian was saying, or it points to an overwhelmingly sort of pro-incumbency wave election. How do you see this argument that this kind of voter turnout should, according to the RJD, according to the Jan Suraj, according to Dilip Cherian, mean change? Barkha, first thing first, that there is no reliable, consistent, analysis in the discipline of political science or psephology, which confirms that a very high turnout always results into change. That's something I need to check. If you look at the data, comparative data from Indian elections and also abroad. So what it conveys to us, this historic, what people are calling bumper for political scientists, which was not unusual. We have been documenting, looking at gender parity slowly emerging. Perhaps men did not pay attention to, men scholars and others did not pay attention. Even in 2020, we were together in the channel. Yes. We were talking about, 5% rise over time. That people missed out. So what I would call that perhaps, last 20 years of what I called, maternal welfare state that has come into play in Bihar, created through not, top-down party system, but through what Nitish Kumar has done through creating what we call, civic associational platform. So that is something, the legacy of, what I have mentioned elsewhere in my works in recent weeks about Karpuri Thakur's dream, equity within equity. So there is a legacy in Bihar that was happening silently. So you believe that this is being driven by the female voter of Bihar? Exactly. My question to you is, agar 10,000 rupees ki mahila scheme nahi hoti, opposition called that scheme a bribe. By the way, that was their allegation. Agar wo scheme nahi hoti, would you still be seeing these numbers? But again, I would reject this idea that there is a vote chori or there is a, No, I didn't say that. I didn't say that. Bribing. We call it in our discipline vote bribing. Barkha, just look at, this is not a 10,000 effect which will result into almost 10% of turnout, This what we call, maybe for me it is called butterfly effect, What has happened over time, the small little, maybe I'm just metaphorically and symbolically mentioning in elections that happens, one cycle yojana has created over time through the maternal agency. And if you just look at, numbers, I will give you numbers for the panelists too. Today, if you look at, 90,000 ASA workers women, 1,12,000 Anganwadi women, and 248 lakh midday meal cooks, 90% women, and 25,000 women personnel through 35% horizontal reservation, 2,61,000 women teachers. So if you look at 70,000 Mukhia, Sarpanches, women, just see the architecture, the infrastructure that Nitish Kumar created, that we missed out. Being, male, what I call male gaze on welfare state system. And I have denounced and deconstructed that this turnout, let us wait and see. I mean, like historically, exit polls are right also. I remember Pranay Rai saying that polling is science, not astrology. So I'm not speaking like astrologer or pundit. Yeah. But it indicates, Barkha, very strongly that in Bihar, women were prepared. If you just look at the way women and EBC, if you look at EBC and Dalit women, so it would be an extraordinary story for Nitish Kumar if it were indeed that these polls are correct. I just want to bring in Dr. Kartikeya Batra now. Dr. Kartikeya Batra. Before you do that, Barkha, I just don't want to allow this elephant to grow bigger and bigger. What I said is that with such a high turnout, it should be a vote
very distinctly one way or the other. I Not see. What I meant is that I would have expected then that the NDA numbers would be higher, or that the MGB numbers would be higher. That's what I meant. So a unidirectional vote, a unidirectional result flowing from the high voter turnout. All right, I stand corrected. Thank you for clarifying that. Yes. Kartikeya Batra, Yashwant Deshmukh of C Voter, talking to me after phase 1, said his own number crunching showed him that there were 4 lakh more registered voters compared to 2020. I'm talking only about phase 1 right now. But 38 lakh more people voted. And of this, he said, 20 lakh of these were women and 18 lakh were men. So something has happened in Bihar. And there I have the same question as Dilip, that if there is such enthusiasm for the election, I think what he's saying is the result should be completely one way, whichever way that is, right? Whether it's this way or that way. Are you A, skeptical of these numbers, or do you largely buy them? B, this increased turnout, correlating it to what we are seeing? Both of those questions for you, Professor Kartikeya Batra. Thank you, Barkha, and thank you so much for the questions as well. I think they're very well framed. So I'll just take the second one first. So as Professor Ashwani Kumar was saying, there is no this kind of consistent correlation between pro-incumbency, anti-incumbency, and turnout, right? High turnout could mean several things. It could mean excitement. It could mean that there is a close contest. But because I was in Bihar for a few days before the election, my own assessment is there's a combination of factors at play here, right? One is that there has been actually a net addition of 6 lakh electors in Bihar, net addition as per the ECI data. But at the same time, we don't know the spatial distribution of that particular addition because some have been removed, others have been added. So it is very possible that the ones who were removed, that denominator has gone down amongst the ones who probably would not have turned up. Let's put it this way. That's a mathematical, mechanical reason. Second is that there were a bunch of factors, and which is why I'm calling this election the AGC of Bihar, age, gender, caste. This election cannot be analyzed through any one dimension. You have to stratify the electors across 3 different dimensions, and then you can make some assessments. If you talk about gender, especially amongst the pro-NDA communities, women were very excited about Nitish Kumar. And this was not just the 10,000 rupee effect. It was, as Professor Ashwani Kumar was saying, it is the larger construct of a welfare state that is favoring them. And in this, we have to admit, it is not just Nitish Kumar's welfare state, but the recent welfare schemes launched by the central government also. So if you speak to an EBC woman on the ground, in the same breath, on a lot of occasions, they would mention, Nitish diye hain, Modi ji bhi to diye hain. And Modi ji kya diye hain? Ration, Awas. And Nitish ji kya diye hain? Jivika, 10,000, pension and Suraksha. This is the pro-NDA voter, mind you. This is still not the pro-MGB voter by caste. This is amongst the pro-NDA voters. You'll find a lot of excitement among women. So to keep him in power, that's one source of excitement. The second source of excitement probably came because amongst the male youths, especially the aspirational youths cutting across caste lines, you found resonance for Tejashwi Yadav and Prashant Kishor. And Tejashwi Yadav is because he delivered the jobs that he did in that 17-month period. Prashant Kishor because he was offering change, although that campaign completely fizzled out by the end of it. That's a different story, Barkha, for a different day. We can dissect exactly how the JSP kind of traveled this particular journey. And the last is that because of Prashant Kishor to some extent, the migrants who came in, that could have bumped up the numbers. Another very interesting phenomenon, Barkha, was because of SIR fears, a lot of people turned up just to make sure that they were on the voter roll. This is anecdotal evidence. So a variety of factors, I think, coalesced, and we are seeing what we are seeing. Now, to the first question, do I believe these numbers? Yeah. I think it's a bit too early to say because the agencies that I usually look up to, See Voter, Access, even there's one more agency called Dales, because I know how they function. But I'm largely waiting for them, and those numbers will come out tomorrow.
But the one thing I can see here is there's a consistent one-way decision that this particular set of exit polls. But can I ask you something briefly? If we can go back to that first slide, which actually shows a swing. Now, we should caveat that this swing is based on an averaging out of the exit poll, a kind of poll of polls. So it's not exact science. Can we please bring it up quickly now, please? Kartikeya, my point is that it's not just the NDA retaining power. If this is correct, and here you can see this, it's the NDA improving. So while there was talk about a fatigue with Nitish and so on, you're not just talking about the NDA retaining, you're talking about the NDA, if these numbers are correct, significantly improving. Would that be your sense from your time in Bihar? Barkha, 2020 is a misread election. 2020 also, the current NDA in its shape and form would have been way ahead of the MGB. If Chirag Paswan had been counted. Chirag Paswan would have been counted, Upendra Kushwaha had been counted. Even if you remove VIP from NDA to MGB, NDA would have been ahead by 4 percentage points, 4 to 5. So Mahagathbandhan started off with a disadvantage. We all knew that. But it did some clever things. It got the IP Gupta party, it got the VIP party, it made sure that, you know, the minorities were kind of consolidating. It made sure that Congress was fighting on a lower number of seats. It made sure the ticket distribution was very good, which was not the case with the BJP, for instance. Several seats we found for the BJP, the ticket distribution was not that great. They were banking, and then they were banking on higher support from some SC, EBC communities because of the Congress. So, for example, Ravidas community within the SC community seems to be moving towards the Mahagathbandhan, especially the male voter. What happened though, while the MJB was focusing on directing the anger of the youth, men especially, and certain social groups towards them, Nitish Kumar's reverse UNO was a 10,000 rupee scheme. And that reverse UNO reactivated that gender cleavage. So you would find in a Mallah village, for instance, if you spoke to the men, they were okay going with the MGB now because Mukesh Sahni was on their side. But the women of the same household, if you spoke to them separately, would say, we will vote for Nitish Kumar. A lot of pushback I get on this theory is, how can you say that men and women vote differently in Bihar? Wake up. That happens. And you know, Barkha, actually it is interesting. As you move down the caste stratum, it is more expected to happen because those women are the ones who are going to the fields every day working, and their survival instincts are much higher. And their autonomy is, Sorry, I'm sorry, cutting you short. I just want political reactions to what you've said. Can I just say one thing? Yes, one thing that makes me a little skeptical about these results yet, these estimates. Numbers. One of the exit polls is saying that Nitish Kumar is attracting 66% or NDA is attracting 66% of the female vote. I think we have that. People's Pulse slide. Can we have the People's Pulse? I have the slide you're talking about, Kartikeya. I just want that to come up. The People's Pulse slide actually is saying that. Here it is, the number you're talking about. Go ahead. Barkha, this is not believable because 67 to 25, whereas last time, you know, the gap was 1 percentage point. So you're saying this number is unbelievable. If it is true, something dramatic has happened, of which one could see certain symptoms, but this is just dramatic to the part 10. Because you can't have a 42 percentage point gap where the earlier gap was 1 percentage point. I'll just wrap up by saying that even amongst men, last time MGB was leading by 2 percentage points. This shows there's a 10 percentage point swing towards the MGB. What I wish to wrap up with is, within the NDA, Barkha, you'll be surprised that actually JDU was the stronger partner. BJP was not faring that well in its seats. Ashwani ji will not like this, but if you went and spoke to people, there was nothing at stake for BJP voters because they were not getting the CM-ship, but they were voting for Nitish Kumar's government. And candidate selection, because the BJP retained a lot of its MLAs, candidate selection was something that they were not happy with. On LJP seats, there was discord amongst core JDU voters, especially the male Kurmis. I went to a seat called Simri Bakhtiarpur where I heard one Kurmi male tell me, जीवन में पहली बार लालटेन में बटन दबा कर आए हैं, चिराग को वोट नहीं देंगे. Now this was anecdotal, but my point is that there were these fissures
at the back end on the LJP BJP seats, whereas JDU looked very comfortable wherever I went because its caste based, gender based was intact. But again, the AGC factors of Bihar will come into play when we finally analyze the it's a good line, but if what Kartikeya you're saying is correct, is it means that Nitish Kumar was underestimated not just by his opposition but also by his ally the BJP, at least in the first part of this campaign. Ashwani ji, अब मैं आप पे आती हूँ. मुझे मालूम है कि आपने कहा कि जोड़ी बहुत स्ट्रांग है मोदी और नीतीश जी, मोदी जी और नीतीश जी की, लेकिन आप भी मानेंगे कि बीजेपी बहुत टाइम से शायद उनकी एक आशा रही है that the BJP leads Bihar. अगर आप पिछली बारी का चुनाव देखें तो नीतीश कुमार dropped dramatically, yet he was made the chief minister. तो एक हर पार्टी की अपनी ambition होती है. Are you also surprised, अगर ये आंकड़े ठीक हैं, are you also surprised as an alliance partner at the projected performance for नीतीश कुमार? हालांकि पार्टी ब्रेकअप नहीं है हमारे पास इन फोरकास्ट में, बट ऐसा लगता है बरखा एक में दिखा रहे हैं लगभग सेम, एक में बीजेपी को आगे दिखा रहे हैं. अच्छा, बीजेपी में आगे दिखा रहे हैं. हाँ, there I am a little skeptical. Even key like in where BJP is surpassing JDU, how that is happening, that will need further investigation. If that is the okay, let's pull up the numbers where they show a party-wise breakup, because that will be very interesting. But in the meantime, Ashwani ji, बताइए. जी बरखा जी, देखिए चुनाव के पहले किस तरीके से जेडीयू बीजेपी सबको अलग करके कि नीतीश जी को ये मुख्यमंत्री नहीं घोषित कर रहे हैं, ऐसे ये नहीं कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें दिखाई गई. और अब कार्तिकेय भाई कह रहे हैं कि जेडीयू यहां जाएगी, भाजपा ये, ऐसा कुछ नहीं. एनडीए को मानिए, हम पांडव हैं, 5 दल एक साथ हैं और पांचों ये एक साथ मुक्का बन चुका है और जनता ने इस मुट्ठी को जो है आबाद किया है. नीतीश जी हमसे काफी कम सीटों पर जीते थे पिछले चुनाव में, आपने अभी वो भी बताया, लेकिन हमने मुख्यमंत्री किसको बनाया? माननीय नीतीश जी को. अब कहां से, जैसे ही लोकसभा का चुनाव होता है, देखिए किस तरीके से विरोधी दल के लोग और कुछ ऐसे ही यहाँ पर जर्नलिस्ट देश में बहुत घूम रहे हैं आजकल यूट्यूब में, भाई वो तो भाग जाएंगे, चंद्रबाबू नायडू भाग जाएंगे. 3-4 महीने तक भगाते ही रह गए लोग, कभी नीतीश जी को भगाते रह गए, कभी किसी को. लेकिन ऐसा नहीं है, नीतीश जी का बड़ा स्पष्ट बयान आया कि अब कहीं इधर उधर नहीं होना है. और उसी का आज भरोसा है कि महिलाओं ने भरोसा किया, युवाओं ने भरोसा किया. आज बिहार में नीतीश कुमार, एक नारा वहां पर दिया था, 25 से 30 फिर से नीतीश, ये नारा वहां पर पॉपुलर हुआ है और हम साथ में मिलकर लड़ रहे हैं. उनकी 100 सीट आ जाए, हमारी 100 सीट आ जाए, तो उसमें कहीं कुछ नहीं है. नीतीश जी, हम लोग हम मतलब HAM, उनकी मांझी जी की पार्टी, LJP और उपेंद्र जी, हम लोग सब लोग मिलकर साथ लड़े हैं और साथ मिलकर चलेंगे आगे तक. कहीं इसमें किसी ने अगर कहीं अटकाने भटकाने की कोशिश, अब सब बेकार है. और अगर किसी एक ने दे दिया है, मैंने शुरुआत में पहली लाइन कहा था, ये एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है. हम लोग 14 तारीख को फिर से बैठ लेंगे. इस बात पे आप और श्याम जी और दीपक जी एक तरफा है कि ये एग्जिट पोल नहीं, ये मतलब कि अभी एक्चुअल रिजल्ट्स आने हैं. इस बात पे तो सभी. बरखा जी, हमको देखिए, हमें खुश करने वाला ये है, लेकिन कहीं इससे और बेहतर रिजल्ट आएगा. मैं ये कहना चाहता हूं, ये एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में जब परिवर्तित होगा तो एक तरफा जो कहा जाता नहीं, प्रो इनकम्बेंसी का है, लोग कह रहे थे. मैं अब आपको थोड़ा सा 1 मिनट लूंगा और बताना चाहूंगा. लोगों ने देखा है बिहार से डर के मारे पलायन. बरखा जी, मेरा जो गांव है, मैं इस समय अपने गांव में हूं, सिर्फ 8 किलोमीटर दूर है बिहार एक तरफ से और 18 किलोमीटर एक तरफ से. मैं आपको एकदम एग्जैक्ट आपको बताना चाहता हूं, 90 के दशक में डर के मारे किस तरीके से पलायन हुआ है. हमारे गांव में सड़कों पर बिहार के लोगों ने जमीनें खरीदी, मकान बनवाए और आज 20 सालों से हमारे साथ भाईचारा से रह रहे हैं. उनके ये डर था. हमने बिहार में, मैं बता रहा हूं, महिलाओं को हमने धमकाया नहीं, हमने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया. वहां पर अश्विनी जी ने कुछ आंकड़े भी दिए हैं, उसमें आत्मनिर्भर बनाया हमने.
हमने जीविका जो आजीविका को वहां पर महिलाओं के लिए आजीविका की बात की, हम वहां शुरू से देते आ रहे हैं उनको 15,000 मिनिमम और 2 लाख तक उनको हम दे रहे हैं। हमने कभी गिराने की बात नहीं की, हमने उठाने की बात की। 6500 पर कैपिटा इनकम से 67,000 पर कैपिटा इनकम पर हम ले आकर खड़ा करने वाले हैं बिहार को। बिजली के बारे में पहले मैंने बताया, सड़कें हुआ नहीं करती थी बिहार में, आज सड़कों का एक जाल बिछा हुआ है। एथेनॉल अच्छा, सबसे ज्यादा वहां बन रहा है। जी, कार्तिकेय ने हमें अलर्ट किया कि एक पोल कहते हैं कि बीजेपी विल बी द लार्जेस्ट पार्टी। अगर बीजेपी लार्जेस्ट पार्टी होती है, क्या आप फिर भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के पक्ष में रहेंगे अगर ये होता है? 20 के चुनाव में क्या हुआ था? अगर देखिए, अगर बुआ की मूछें होती तो फूफा उनको कहते हैं, ये कहने वाली कोई बात नहीं है। 20 में क्या हुआ था? हमने उनको बनाया था नीतीश जी को मुख्यमंत्री, और आगे भी हम कहां मना कर रहे हैं। ये देखिए बरखा जी, आप बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, मगर हम लोगों के मुंह से कोई भी पत्रकार आज भारतीय जनता पार्टी के एक नेता का बता दे कि नीतीश जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, लेकिन फिर भी पता नहीं कहां से आप लोग खोजने की कोशिश करते ही रहते हैं। कहीं टूट नहीं है। वहीं पर नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ है, मोदी जी दिल्ली में नेता है, नीतीश जी बिहार में नेता है, और चुनाव खत्म होने दीजिए 14 तारीख के बाद, आपको सबके सामने दिख जाएगा। जनता ने ये नहीं किया कि अभी क्या हुआ हमारे। एक लाइन हमारे आरजेडी के भाई यहाँ बैठे हुए हैं, आरजेडी के भाई बैठे हुए हैं। इन लोगों के समर्थकों को ये लगा बरखा जी कि हम बम्पर वोट से चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन देखिए रास्ते अलग थे। कांग्रेस के नेता जो है वो पता नहीं कोलंबिया और वहां मलेशिया घूम रहे थे, लेकिन तेजस्वी जी ने अपना रास्ता किया, तेजस्वी जी ने मेहनत किया, लेकिन उस मेहनत पर इनके कार्यकर्ताओं ने जो लाठी में तेल पिलाना शुरू कर दिया, ये इनको सबसे पीछे ले जाने वाला चुनाव है ये, और आप देखिएगा सबसे कम नंबर पर आकर ये खड़े हो जाएंगे। जी, this actually is a bit confusing, Kartikeya. Just a clarification. If the BJP is projected to be the single largest party by matrices, then BJP is projected to get 64 to 73, but the JDU is projected to get 67 to 75. So how is the BJP the single largest party? Is this wrong? Do we have a mistake on our screen? We do. Yeah, let's take it off. No, sorry. This is the matrice is giving overlapping numbers. Achha, so then when we are saying the BJP projected to be the largest party, that's wrong. The conclusion is wrong. People's Insight is saying that. People's Insight says BJP 68 to 72, JDU 55 to 60. Okay. And LJP 9 to 12, Hum 1 to 2, RLM 0 to 2. The same agency is giving RJD 60 to 72 seats, 9 to 13 Congress, left 11 to 14, VIP 2 to 3. This is People's Insight. Matrice is giving overlapping figures. As per Matrice, it could be either of the two parties will become the single largest. But RJD is getting 53 to 58, Congress 10 to 12, and the left parties are getting 7 to 11 seats. Okay. Thank you for clarifying that. Could we have the numbers of the second poll up on our screen as well? But now Shyamji has been waiting very patiently. Shyamji, आप कहना चाह रहे थे, अब देखिए कुछ पोल्स तो कहते हैं कि आरजेडी, जैसे जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं मैट्रिक्स, 53 to 58 सीट्स आएंगी उनकी। तो इस पे आप क्या कहेंगे? और जो नीतीश जी के लिए प्रोजेक्शन है वो तो बहुत ज्यादा प्रोजेक्शन है, तो इसका रिएक्शन आपसे लूंगी, फिर दीपक जी से लूंगी, एंड देन आई विल कम टू सुगता एंड अश्विनी हु बीन वेटिंग वेरी पेशेंटली। दीपक, श्याम जी ऑडिबल है मेरी? हाँ आवाज जी, आ रही है? जी। देखिए, एक दो बात बहुत संक्षेप में हम आपको बताना चाहते हैं कि अभी 22 से 24 तक हम लोग थे, जेडीयू हमारे साथ थी, तो उस समय 94 लाख गरीबों का हमने पता लगाया स्टडी करके, सोशियो इकोनॉमिक सर्वे हमने कराया। 2020 में इनकी डबल इंजन की सरकार के बावजूद भी हम सबसे अधिक डिजिट में थे, आपको याद होगा। तो बिहार की सम्मानित जनता ने हमेशा राष्ट्रीय जनता दल को एक बड़ी संख्या दी है, और वैचारिकी सबसे बड़ा कारण है। नीतीश कुमार की जो राजनीति पर आप टेक ऑन कर रहे थे, डिबेट कर रहे थे, एक बात आपको जरूर बताना चाहते हैं, पॉलिटिकल डिबेट के लिए, मीडिया डिबेट के लिए ठीक है, यू कैन गो अहेड, मुझे इस पर कुछ नहीं कहना है, कि आप वीमेन वोटर की जो बात कर रही हैं, आप देखिए कि जो लीकर बैन हुआ बिहार में, अब ये डिबेट करने के लिए बढ़िया टॉपिक है, लीकर बैन हुआ और महिलाएं वोटर नीतीश कुमार जी को कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी से अगर आप, आई होप, मतलब मैं अगर वहां रूबरू हो कि क्या जमीनी स्थिति सूरत हाल है शराबबंदी की, तो सर सिचुएशन इज अ मच डिफरेंट। तो मैं तो ये आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि सोशल ऑडिट इसकी करा लेते तो जमीनी हकीकत पता चल जाती।
मैं आपको बताता हूं। तो इसलिए जो है इस पर जो तमाम जो हमने कंक्रीट काम किया है, जैसे युवाओं को नौकरी देने का काम किया, पलायन की बात हमारे बीजेपी के मित्र बता रहे थे, आपको हम बता रहे हैं कि 1990 से लेकर 2005 में सामाजिक न्याय की सरकार थी। आपका अलग नजरिया हो सकता है। और एक बात और जान लीजिए, माइग्रेशन कॉलोनियल टाइम से बिहार में हो रहा है। दूसरे देश में लोग गए, दूसरे देश में प्रधानमंत्री भी बने हैं बिहार से ही जाके, आप जानते हैं। तो ब्लेम खाली सिर्फ लालू प्रसाद यादव को करने के लिए, पॉलिटिकल रैटरी के लिए ठीक है, पॉलिटिकल गेन होता है, ये बात जान लीजिए। लेकिन आप 15 साल की तो सरकार रही जो बिहार जैसे जितनी सामाजिक भेदभाव और अन्याय दलित पिछड़ों को हिम्मत साहस देने का काम किया, वो आपका सिलेबस नहीं है, हमें पता है। लेकिन आज देखिए कि दलित बहुजन अकलियत पिछड़े और ईबीसी ओबीसी जो फर्स्ट जनरेशन के लोग हैं, उनको हर घर नौकरी, आर्थिक न्याय का जो इस पर टेक ऑन हुआ है, वो बेमानी नहीं है। वक्त का इंतजार कीजिए, 14 तारीख को हमारी सरकार बनी। जी ओके। आरजेडी नहीं मानती इन एग्जिट पोल्स को। पीपल्स इनसाइड जिनके बारे में कार्तिकेय बात कर रहे थे, उनके आंकड़े भी हमारे स्क्रीन पे है। उनका कहना है दे आर द वंस प्रिडिक्टिंग द बीजेपी। वैसे तो मेरे को तो ये भी ओवरलैपिंग ही लग रहे हैं। नहीं, oh sorry, the RJD, right, sorry, they are predicting 68 to 72 for BJP, 55 to 60 for JDU, and 65 to 72 for RJD. So one poll is predicting that the BJP will be the single largest party. If we can just move the banner to the Matri's numbers, they are predicting overlapping numbers but a very handsome performance for the JDU. इस पे मैं दीपक आपसे पूछना चाहती हूँ, and I thank Sugata and Professor Ashwani for being very patient. प्रशांत किशोर ने अपने इंटरव्यू में मुझसे और लोगों से भी कहा कि अगर नीतीश जी की 25 से ज्यादा सीट आ जाए तो वो राजनीति छोड़ देंगे। तो ये जो एग्जिट पोल्स कहानी बता रहे हैं, उसमें तो प्रशांत किशोर मे बी ही वाज मेकिंग अ रिटोरिकल स्टेटमेंट, और उसको हम लिटरली ना लें वो एक अलग बात है। पर आप क्या कहेंगे, राजनीति छोड़नी पड़ेगी प्रशांत किशोर को? बरखा जी, आप बहुत अनुभवी पत्रकार हैं और आपने बहुत सारे इलेक्शंस देखे हैं जी। पहली बात मैं कहना चाहता हूं कि बिहार में इस बार हिस्टोरिकली टर्नआउट हुआ है जी। और पिछले 35 साल से राजद गठबंधन और राजग गठबंधन की सरकार रही है। कुछ भी ऐसा पिछले 5 साल में नीतीश कुमार जी ने नहीं ऐसा कर दिया है कि उनके लिए इतनी ज्यादा वोटिंग उनके पक्ष में हो, और राजद गठबंधन ने ऐसा कुछ नहीं किया है जिसके कारण उनके पक्ष में हो। ये सारी वोटिंग जो बहुत ज्यादा वोटिंग हुई है, मतदाता को जागरूक करने का जो मेरे नेताजी ने काम किया है, वो ये सारे बढ़े हुए वोटिंग और एक अलग जो हमारा क्षेत्र बना है, वो सारी वोटिंग जनसुराज के लिए के सपोर्ट में हो रही है। और ग्राउंड रियलिटी हमारे जो बहुत सारे अनुभवी पत्रकार हैं नहीं देख पा रहे हैं। जहां तक ग्राउंड रियलिटी है कि जदयू के वोटर बीजेपी, एलजेपी एंड अदर्स को वोट नहीं दे रहे हैं, और बीजेपी के वोटर जदयू को वोट नहीं दे रहे हैं, चिराग पासवान के वोटर जदयू को वोट नहीं दे रहे। ये लोग एक चंक पांडव की बात करते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट है। जहां तक महागठबंधन की बात है, तो आपको याद होगा कि 20 साल के शासन काल के बाद भी प्रधानमंत्री जी आते हैं तो जंगल राज, कट्टा और वगैरह की बातें करने लगते हैं। इससे पता चलता है कि वो सिर्फ राजद का या लालू जी के समय का भय दिखाकर वोट लेना चाहते हैं, और राजद वाले उनका और भाजपा और उनके लोगों का भय दिखाकर वोट लेना चाहते हैं। पहली बार तो बिहार में पहली बार तीसरे विकल्प के रूप में, सशक्त विकल्प के रूप में। पर दीपक जी बहुत संक्षेप में पूछूंगी, देन सुगता एंड प्रोफेसर अश्विनी हैव टू कम इन। जब मैं बिहार में थी तो मैंने बहुत से लोगों से जब बात की, तो उसमें जो कुछ एनडीए के वोटर्स थे, उन्होंने बहुत प्रशांत किशोर के बारे में अच्छी अच्छी बातें बोली, पर उसके बाद उन्होंने बोला अभी उनको एक और चुनाव की जरूरत है। यू हैव टू वेट अनदर इलेक्शन फॉर प्रशांत किशोर। क्या ये हो सकता है कि ब्रांड, पर्सनल ब्रांड अच्छा बनाया, लेकिन पार्टी इंफ्रास्ट्रक्चर, कैंडिडेट्स नहीं थे, खुद चुनाव नहीं लड़े, ये वीकनेसेस रही? जी नहीं, हमारे लिए जनता चुनाव लड़ रही है, और हमारे प्रशांत किशोर जी जो नेताजी हैं वो तो चुनाव लड़ ही रहे हैं। जनता को उन्होंने जागरूक करने का काम किया है, और जनता हमारे लिए चुनाव लड़ी है। हमें बाकी चीजों की जरूरत नहीं है, जनता हमारे लिए फाइट कर रही है, और जनता ने हमें वोट दिया है। और आने वाले 14 तारीख को आप देखेंगे कि बिहार एक नया इतिहास लिखने वाला है। हमारे नेताजी ने जो कहा है वो अक्षरशः सत्य हो।
मेरी उम्मीद यही है कि मैं आप सबसे दोबारा 14 तारीख को मिलूंगी. बट Sugata, let's bring you in. You see, there are ramifications for power dynamics between the BJP and JDU, between Tejashwi and Rahul Gandhi. Certainly, there was a period in the middle where Rahul Gandhi was not present for the campaign. There was a rumor that he was not happy with Tejashwi Yadav being declared the chief ministerial candidate. There were problems in some of the seat adjustments and so on. If these numbers are accurate, and I think somebody asked a relevant question, that what has Nitish done that it is so dramatic, or what has the BJP done, and that's a question worth asking. But if these numbers are accurate, what does it mean for changing or shifting power dynamics? But I mean, you're absolutely right. I mean, there has been some. Did we just lose Sugata right at the point he was trying to make his point? We'll have him reconnect. Professor Ashwani, you want to jump right in and answer that question? You said that it's a maternal welfare state, but, and it's not any one thing, and the change has been happening over a period of time. But this would point to a unidirectional sort of almost surge or improvement. What is that one reason for that, if you had to analyze it? Can we unmute Professor Ashwani? Sir, are you muted at your end? Can you unmute yourself? Yeah. Barkha, I'm looking at this historic surge, and I'm also looking at exit poll numbers. And although as a trained political scientist, psephologist, we take our exit polls with a pinch of salt, but we look for trends, qualitative trends. Combining both, there are two things very clear. That 2025 election is perhaps historic election, if not critical election in American lingo. Perhaps it's opening up what we call critical juncture. Those who are my learned panelists would recall the thesis of critical juncture in two ways. First, it clearly indicates that there is a consolidation in Bihar of a process, a proper process which is quite different from 67 historic election or 77 historic election, towards what I call consolidation and entrenchment of women, EBC and Dalits. This kind of a renewable coalition that's going to decide. Just look at, and the second, the larger theoretical insight, combining both, is that Bihar is on the cusp of larger democratic and demographic shifts leading to whichever election goes for a development surplus or development plus. Okay. That's a very deeply thought academic perspective. But Deepak ji कुछ कहना चाहते हैं, then I'll give the last word to Kartikeya Batra. Deepak ji बोलिए. अच्छा, श्याम जी बोलना चाहते हैं. चलिए दीपक जी. मेरा कहना है कि बरखा जी, एक इलेक्शन को याद रखना चाहिए भारतीय राजनीति में, जो श्री एनटी रामाराव का इलेक्शन था. उन्होंने नई पार्टी बनाई थी और आंध्र प्रदेश की जनता के पास जाके उनकी बातों को समझा था और बताया था. और उस समय के कोई सर्वे, कोई भी लोग उनको वैल्यू नहीं दे रहे थे, उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे थे. इवन इंदिरा गांधी जी भी उनके खिलाफ थी, और उस समय वो सबको झुठलाते हुए, लड़ते हुए आगे बढ़ के आए और उन्होंने हिस्टोरिकल विन पाई और अपनी सरकार बनाई थी. एनटी रामाराव जी भी जनता के बीच गए थे, पदयात्राएं की थी और हर घर पहुंचे थे. हमारे नेताजी ने भी वही काम किया है और बिहार की जनता के पास गए हैं, और हमें उम्मीद है कि बिहार की जनता ने झोली भर के उनको आशीर्वाद दिया है. तो ये इतने हिस्टोरिकल टर्नआउट में दिख रहा है, और वो 14 तारीख को जो परिणाम आएगा वो हमारे पक्ष में होगा. ये हमारी जनता पर हमें विश्वास है. श्याम जी योर लास्ट कमेंट. श्याम जी को अनम्यूट किया जाए प्लीज. जी हाँ, देखिए बरखा जी, एक बात बहुत क्लियर मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि दिल्ली में 10 साल पहले एक पार्टी आई थी और सारे क्रांतिकारी दावे कर रही थी, आपको याद होगा. और सारे मतलब कि जो है कह रही थी कि वो लोकसभा में और राज्यसभा में सदस्य आम जनता चुनेगी. 3 उनके राज्यसभा में सदस्य कहाँ के वो जानते, उस पर वो इम्पोर्टेंट सवाल आज नहीं है. बिहार में भी कुछ ऐसे दल आए हैं बिना आइडियोलॉजी के, और बिहार एक पॉलिटिकल कॉन्शियस स्टेट है. तो विदाउट आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट इन बिहार इज अल्फाबेटिकल टीम. इट इज प्रूवन फैक्ट. इस पर 14 तारीख के बाद देखिएगा ना किधर उनका मूव होगा.
तो कहने का मतलब है कि एक नहीं, तरफ तो पॉलिटिकल आप कह रहे हैं जनसुराज की कोई, आप जनसुराज की तरफ इशारा कर रहे हैं क्या कि पोस्ट आइडियोलॉजी या नो आइडियोलॉजी? जी, yeah, no ideology without any ideological commitment. Any party in political conscience like Bihar is an alphabetical team. But do you mean, are you calling the जनसुराज the B team of the BJP? मैं आपका डिकोड कर रही हूँ, सिंपल बोल रही हूँ, क्या आप ये कह रहे हैं? देखिए बरखा जी, आप यू आर सच अ सीनियर जर्नलिस्ट, इनविजिबल थ्रेड यू नो इन पॉलिटिक्स, यू नो इट। आई डोंट वांट टू कमेंट। कुछ ज्यादा इनविजिबल नहीं कहा आपने दीपक, एक लाइन में। आप क्या बीजेपी की बी टीम है, यही कह रहे हैं आरजेडी के लीडर? राजद की आइडियोलॉजी क्या है इसको बिहार की जनता समझ रही है, और उनको पिछले 20 साल से दरवाजे के बाहर बिठा रखी है, पहली बात। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जनसुराज पार्टी ने पहली बार बिहार की जनता के मूल समस्याओं पे ही चुनाव होने दिया है। नहीं तो बिहार में जंगल राज मंगल राज पे चुनाव होता था। पहली बार बिहार की जनता के मूलभूत समस्याओं पर सबने बात की है। और बिहार की जनता की हम ए टीम है, और जनसुराज पार्टी बिहार की जनता की ए टीम है। बाकी बी टीम कौन है, सी टीम कौन है, डी टीम कौन है, अपना डिसाइड करते रहे। जनसुराज पार्टी एकमात्र पार्टी है जो पूरे बिहार में चुनाव लड़ रही है, और बिहार की जनता की ये टीम है। ये लोग तो कभी हिम्मत नहीं जुटा पाए कि बिहार की सारी सीटों पर चुनाव लड़ सके। ए टीम, बी टीम, सी टीम, डी टीम बना के हम कुछ भी लूटते हैं, आप कुछ भी लूटते हैं, एक दूसरे को लूटते रहे। हम बिहार की जनता की ये टीम है, और पहली बार पूरे बिहार के जनता के सामने गए हैं और हर सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। ओके, आई हैव अच्छा, एक मिनट। अब मैं कार्तिकेय को शाही जी, आप कुछ बोलना चाहें बिफोर कार्तिकेय बत्रा गेट्स द क्लोजिंग वर्ड? जी देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग जो है टॉपिक हमारे आरजेडी के और जनसुराज के भाइयों ने छेड़ दिया है। तो वही सही है कि एक धूमकेतु जो है दिल्ली में भी उतरा था, और वो धूमकेतु इधर भी है। उस पार्टी के जनसुराज के नेता जो प्रशांत किशोर जी हैं, उनको स्वयं पर विश्वास नहीं है, या तो फर्श पर या अर्श पर जब बात कर रहे हैं। यहाँ जब पार्टियां आती हैं तो कहती हैं कि हमने मेहनत किया, उन्होंने भी मेहनत किया है, अपने लोगों को उन्होंने जो है चुनाव लड़वाया है, अच्छी बात है। तो उनको तो कहना चाहिए, जो भी एक बेहतर पॉजिटिव, पहले से ही नेगेटिव सोचकर बैठे हैं कि हम जो है फर्श पे ही रहेंगे, जब फर्श की बात आ गई तो फर्श पे रहेंगे। जनता ने जो डिसाइड किया है वो 14 को एक बार हम लोग फिर मिलकर देख लेंगे। लेकिन आज जिस तरीके का ये वोटर टर्नआउट, जन सैलाब जो दिखा है, मतलब ये बिहार में इस तरीके का उत्सव नहीं दिखा था। छठ के बाद का ये उत्सव बाहर से आकर लोगों ने मनाया है, और वो अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, और ये बताया है कि हम किसी के बहकावे में, किसी के फुसलावे में नहीं आएंगे। हमको जिसके ऊपर भरोसा है स्थिरता का, जिसके ऊपर भरोसा है शानदार नेतृत्व का, उसको ही फिर से रखेंगे। जी, I have to give the closing word now to Dr. Kartikeya Batra. Kartikeya, I know that the RJD says that the JSP, the Jansuraj party, is without ideology and it could move. But if these numbers are correct, then Prashant Kishor's support will either not be needed or he will not have enough to offer support if these numbers are correct. Deepak ji obviously disagrees. Now over to you for the last word. No, I think, Barkha, as I said, a separate show should be dedicated to the JSP's journey in this election. There were different phases in the journey. One thing is for sure, in the last 10-15 days, it fizzled out. But, it was attracting a lot of genuine attention from especially the young voters. See, Barkha, as I said, the AGC election, and I came up with this phrase after a lot of travel through Bihar. Because different demographic groups had different issues, which is why this was an election which you could not call. I am still not calling the election because, see for example the following. You have women, you have EBC and Dalit women who are very vocal about BJP and JD. And then at the same time, their husbands from the Malla community are moving towards Mukesh Sahni because he has moved toward the NGP. Then at the same time, you have Yuva Yadav, who's excited about Tejashwi Yadav. And then you have the Yuva upper caste who's thinking, where do I even go now? He sees RJD, he sees BJP, he sees JD, there's no confidence that is inspired. He looks at Prashant Kishor. And he's looking at Prashant Kishor. Prashant Kishor's campaign fizzles out at the last moment. But some of them still go and vote for them. You go to the youth in Saharsa and they are happy with whatever JDU has done.
रोड बना दिया, हमको सुरक्षा दे दिया, सब ठीक है. The same Yuva in Bhojpur Magad is more aspirational. He wants jobs. Across caste lines, he wants Tejashwi or PK. More Tejashwi than PK. So therefore, this election, if these calculations have been done with just the caste rubric or gender rubric in mind, we may be in for a little bit of a different reality. As I started my comments on this show by saying that NDA started with an advantage, a social coalition advantage. Yeah. Whether the MJB will be able to close in was the question. Yeah. And they did some smart things. And one thing that I am not very convinced about is BJP exceeding the JDU seat count. So some issues I won't be surprised if NDA wins. I won't be surprised if marginally MGP scrapes through. But some of the pointers that I kind of picked up from the field I'm giving you, but remember that the party-wise seats are on the screen right now. Yeah. And they forecast 10 to 12, 9 to 13 for the Congress. One gives 67 to 75 for the JDU, 55 to 60 by the other, 53 to 58 by Matriz for RJD, 65 to 72 by People's Insight. And then the last one poll gives more to the BJP than to the JDU. Yeah, exactly. Yeah. So some of these pointers I think are interesting. We'll wait for tomorrow when some of the other bigger agencies come out with their numbers. Yeah. But I do think that Nitish Kumar, I will dissuade your viewers from thinking कि 10,000 रुपए की रिश्वत देकर वोट ले लिया नीतीश कुमार ने. Nitish Kumar's 10,000 rupee scheme was grease in a machinery which he had built over 20 years. And that machine was, as was said by Professor Ashwani Kumar, a maternal welfare state. Okay. The Purush, on the other hand, the middle-aged Purush was resigned to the fate, therefore focusing on caste, candidate, Bahari, Andri, and the Yuva Purush, the Yuva non-Yadav Purush is probably the biggest, I would say the one category which feels the most hopeless, कि हम क्या करें? नौकरी नहीं है, काम नहीं है, हम क्या करें? Some of them return back to their caste fold. Some of them want to vote for change and they go beyond their caste lines. Which is why this is an election which shows you so much, but also hides a lot. One last thing. In my travels in Bihar, Barkha, it's a lovely state, lovely people. A lot of work has been done, but I think at least 10 times more work should be done and can be done. I will just say in the end that if these numbers are correct, even remotely, I will repeat that Nitish Kumar has been underestimated by pundits, by pollsters, and even not just by his opposition, but perhaps, Ashwani ji will forgive me for saying this, even by his ally, the BJP. So we will leave it there. The real result is on the 14th. I hope to see many of you there. Kal bhi interesting day here. As Kartikeya said, we're expecting numbers from C Voter and Access My India. So hope to see some of you back. But in the meantime, abhi ke liye thank you. Namaskar to Shyam ji, to Deepak ji, to Professor Ashwani, to Ashwani Shahi ji, and to Kartikeya Batra ji. Thank you so much. See you all soon. Thank you. It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.